Hey, do you want to learn American English? So I'm going to tell you a very common sentence in American English. They usually say, what's up? Hey, what's up? What's up? अच्छा, what's up से क्या मुराद है? Make sure that I'm not talking about WhatsApp. I'm talking about what's up. What's up से मतलब होता है, how are you? How are you doing? Or what's going on? क्या चल रहा है? Getting a point? So make sure that कि what's up, if somebody is asking you what's up, तो आप उसे detail answer करेंगे. What's going on? What is something new? Is there anything new? Or how are you? These are the meaning of a what's up. So I was watching, English movie, and I watched actually over there. A man came into the club and asked from his friend that, hey Mark, what's up? He said, not much. अगर हम बात कर रहे होते हैं अमेरिकन इंग्लिश की, तो उसमें क्या होता है कि हमने फ़ोन किया, I'm just making you a call over here, okay? और मैंने कहा कि भाई मैं लाइन कट कर रहा हूँ, मैं लाइन काट रहा हूँ, मैं लाइन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ. ये हम कहते हैं किसमें? पाकिस्तानी इंग्लिश में आमतौर पे, यानी कि पाकिस्तान में आमतौर पे कहते हैं, ठीक है. लेकिन मेक श्योर दैट अमेरिकन दे डोंट से दिस. ये अमेरिका से आए, ये सही बताएंगे जी. They say, I'm going to hang up the call. I'm going to hang up the call, or I'm going to end this call. And they say, I'm going to end the call. So make sure that hang up से मुराद, अगर कोई अमेरिकन से आप बात करें किसी अमेरिकन से, and the person is going to say, and the person is saying कि I'm going to hang up the call, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं कॉल कट करने जा रहा हूँ. ये कहता है कि hang up, okay? Hang up means कि मैं कॉल कट कर रहा हूँ. I'm going to discuss about the difference between businessman and entrepreneur. याद रखिएगा कि businessman किसे कहते हैं और entrepreneur किसे कहते हैं. First of all, the correct pronunciation is entrepreneur. It's not entrepreneur, intrapreneur. This is not the right pronunciation. याद रहे कि entrepreneur word, it has come from French language. Okay? Businessman किसे कहते हैं? Businessman वो बंदा होता है जो आमतौर पर जो बिजनेस को ऑपरेट करता है, चलाता है, राइट? और जो ऑलरेडी जो बिजनेसेस होते हैं उसे जो बड़ा करने का काम करता है. जबकि एंटरप्रेन्योर जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो नए नए स्टार्टअप्स करते हैं, यानी कि कोई नया आइडिया लेकर आते हैं, कोई इनोवेशन लेकर आते हैं और उसके बाद जो उसको चलाना शुरू करते हैं, उसके बाद उसे बिल्ड करते हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे शख्स को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर. याद रखिएगा एंटरप्रेन्योर रिस्क ज़्यादा लेता है, एंटरप्रेन्योर टर्म के साथ रिस्क अटैचमेंट है. Got it? Hey, do you want to learn American English? So, what time is it? हम वक्त किस तरह से पूछते हैं इंग्लिश में. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं. So, number one is that, what time is it? अच्छा, याद है ये बहुत बेसिक है और फॉर्मल है. Another, जो polite में टाइम पूछने का, could you tell me the time please? So, I'm going to tell you one more thing is that, do you have the time? अच्छा, अजीब सी बात ना, word to word translate करोगे तो अजीब हो जाएगा. Do you have the मतलब कि आपके पास टाइम है? No. But इसकी मीनिंग एक्चुअल में होती है, भाई वक्त क्या हो रहा है? It's a casual way. Okay? पहले मैंने आपको क्या बताया कि more बेसिक और कॉमन वे, फिर उसके बाद पोलाइट वे बताया. इसके साथ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल वे क्या होता है? एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? इट्स अ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल वे. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉल्ड इज इट टाइम येट? इज इट टाइम येट का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक कोई इवेंट है, जैसे हमने मूवी देखना है या हमें खाना खाना है, तो हमने पूछा कि भाई मूवी का क्या वक्त हो गया, या मैच देखना है तो क्या मैच स्टार्ट होने का वक्त हो गया? इज इट टाइम येट? So these are the way that we ask about the time, that what time is it? Thank you very much.